क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2 हमने कराया था। तो पार्ट 3 भी देख ले। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 3। Find area of triangle whose sides are L1, L2 and L3. L1 is y is equal to 2x plus 3 यानी 2x minus y plus 3 is equal to 0. L2 second line, it is 2y plus 3x. 2y plus 3x is equal to 3. इसका मतलब 3x plus 2y minus 3 is equal to 0. And L3 is x plus 2x plus y plus 2 is equal to 0. Find area of triangle whose sides are L1, L2 and L3 given by these lines. फर्स्ट करें ये है L1, फर्स्ट करें ये है L2 और ये है L3। आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। L1 L2 को सॉल्व करें, आपको इनका इंटरसेक्शन P1 मिलेगा। L2 L3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, इनका इंटरसेक्शन P2 मिलेगा। L1 L3 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो इनका इंटरसेक्शन P3 मिलेगा। पहले तो आप P1, P2 और P3 फाइंड कर लें। Now solve L1 and L2 simultaneously. Solve L1 and L2 simultaneously. फर्स्ट इक्वेशन यानी L1 में है -y, L2 में है +2y। इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। मल्टीप्लाई इक्वेशन L1 by 2, then add in L2. तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 4x minus 2y plus 6 is equal to 0 और L2 है 3x plus 2y minus 3 is equal to 0. ऐड करेंगे plus 2y minus 2y कैंसिल, 7x plus 3 is equal to 0. इसका मतलब 7x is equal to -3, so x is equal to -3 upon 7. x की वैल्यू आप L1 में पुट कर दें। कंसीडर L1 L1 is 2x minus y plus 3 is equal to 0. So 2 into -3 upon 7 plus 3 is equal to y. इसका मतलब y is equal to -6 upon 7 plus 3. Y is equal to -6 plus 21 divided by 7. इसका मतलब y is equal to 15 upon 7. तो आपको x और y की वैल्यूज मालूम हो गई। इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन ऑफ L1 और L2 मालूम हो गया। L1 is P1 is equal to -3 upon 7
कॉमा 15/7। और इसी तरह से आप सॉल्व करें L2 और L3 को। L2 में 2y है, L3 में y है। इसका मतलब आप L3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें फ्रॉम L2। मल्टीप्लाई L3 multiply L3 by 2, then subtract from L2। L2 है 3x plus 2y minus 3 is equal to 0, और 2 से जब आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x plus 2y plus 4 is equal to 0। माइनस करें, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, ये हो जाएगा x minus 7 is equal to 0, so x is equal to 7। x की ये वैल्यू आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 3 में। If we consider L2, L2 is 3x plus 2y minus 3 is equal to 0, so 3 multiplied by 7 plus 2y minus 3 is equal to 0, so 21 plus 2y minus 3 is equal to 0. So 2y plus 18 is equal to 0, so 2y is equal to minus 18, y is equal to minus 18 upon 2, यानी minus 9। तो आपको x भी मालूम, आपको y भी मालूम, इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन ऑफ L2 और L3 मालूम हो गया, यानी P2 मालूम हो गया। इट इज इक्वल टू 7 कॉमा माइनस 9। नाउ सॉल्व L1 एंड L3। L1 में माइनस वाई और L3 में प्लस वाई, इसका मतलब आप ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व L1 and L3 by adding these equations। L1 is 2x minus y plus 3 is equal to 0, and L3 is x plus y plus 2 is equal to 0. Plus y minus y cancel, you left 3x plus 5 is equal to 0. So 3x is equal to minus 5, इसका मतलब x हो गया minus 5 upon 3। x की ये वैल्यू आप L1 या L3 में पुट कर दी। If we consider L1, which is equal to 2x minus y plus 3 is equal to 0. So 2 into minus 5 upon 3 plus 3 is equal to y. Minus 10 upon 3 plus 3 is equal to y. Y is equal to minus 10 plus 9 divided by 3. Y is equal to minus 1 upon 3. Y is equal to minus 1 upon 3 when x is equal to minus 5 upon 3। इसका मतलब P3 थर्ड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट आ गए minus 5 upon 3 कॉमा minus 1 upon 3। अब आप एरिया फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय P1, P2, P3। Area of triangle formed by P1, P2, P3, it is half of determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, x3 minus x1, y3 minus y1।
Now it is equal to half of determinant of x2 minus x1. So it is 7 minus into minus 3 upon 7. It is plus 3 upon 7 minus 9 minus 15 upon 7 minus 5 upon 3 minus into minus 3 upon 7 यानी plus 3 upon 7 minus 1 upon 3 minus 15 upon 7. Now it is equal to 1 upon 2 multiplied by determinant of order 2 by 2. 7 is the LCM, so 49 plus 3 divided by 7. यहाँ भी 7 LCM, तो minus 63 minus 15 divided by 7. यहाँ भी LCM आ जाएगा 3 into 7 21. So it becomes minus 35 plus 9. यहाँ पे भी LCM 21, so it becomes minus 7 minus 45. Further simplify करें तो it is equal to half of determinant of 52 upon 7. It is minus 78 upon 7. It is minus 26 upon 21, and it is minus 52 upon 21. It is equal to half of, further simplify करें तो 52 upon 7 multiplied by minus 52 upon 21 minus 78 upon 7 into minus 26 upon 21. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1 upon 2 multiplied by minus 2704 divided by 21 into 7, it is equal to 147. Minus into minus plus into minus is minus. 78 into 26, it is 2028. Divided by 7 into 21 is 147. It becomes 1 upon 2 multiplied by 147 is the LCM. Minus 2704 minus 2028. It is equal to 1 upon 2 multiplied by minus 4732 minus 4732 divided by 147. तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया भाई 2366. It is equal to minus 2366 divided by 147. 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल करें, it becomes 21 and it becomes minus 338. It is equal to minus 338 divided by 21. अब चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो कंसीडर विद पॉजिटिव साइन.
considered with positive sign. So area of triangle formed by L1, L2 and L3. It is equal to 338 divided by 21 square units. मैंने गालिबन कहा था कि आप ट्राई कीजिएगा। तो ज़्यादातर बच्चे फ्रैक्शन में रिजल्ट को देख के बेहोश हो जाते हैं। एक और पार्ट भी था, पार्ट नंबर 4, वो भी देख लें। पार्ट नंबर 4, L1 is equal to y is equal to mx, L2 is equal to y is equal to m prime x, and L3 is equal to y is equal to b. L1, L2 और L3 वैसी ही लाइंस दे रखी हैं, बस इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है। न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं हैं सॉल्व करने का तरीका कार वही कि L1, L2 को सॉल्व करें, आपको P1 मिलेगा। L2, L3 को सॉल्व करें, P2। L1, L3 को सॉल्व करें तो आपको P3 मिल जाएगा। तो सॉल्व L1 एंड L2। तो आपको डायरेक्ट 0 0 आप लिख सकते हैं। रीज़न उसकी ये है भाई कि दोनों में y इंटरसेप्ट नहीं, इसका मतलब दोनों ही ओरिजिन में से पास हो रही हैं, इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन ओरिजिन ही होगा। और अगर सॉल्व करके दिखाना है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू m प्राइम x। इफ वी सब्ट्रैक्ट तो y तो हो गया कैंसिल। 0 इज इक्वल टू mx माइनस m प्राइम x। तो 0 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय m माइनस m प्राइम। इसका मतलब x हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय m माइनस m प्राइम। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0। x is equal to 0 because y is equal to mx. When x is equal to 0, m into 0, it becomes 0. इसका मतलब y also be equal to 0. इसका मतलब आपको P1 मिल गया। P1 is equal to 0, 0. Now solve L2 and L3. Solve L2 and L3. So from L3, you are given the value of y. It is b। L2 में ये वैल्यू पुट कर दें। y is equal to m prime x, यानी b is equal to m prime x। इसका मतलब x is equal to b divided by m prime। y गिवन था, x मालूम कर लिया, इसका मतलब P2 आपको मालूम हो गया। इट इज b अपॉन m प्राइम कॉमा b। अब इसी तरह से आप सॉल्व करें L1 और L3 को। सॉल्व L1 एंड L3। तो L3 में आपको डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। L3 इज y इज इक्वल टू b। L1 इज y इज इक्वल टू mx। इसका मतलब b इज इक्वल टू mx। इसका मतलब x इज इक्वल टू b अपॉन m। जब x की वैल्यू b अपॉन m है और y b है तो इसका मतलब आपको P
upon m comma b. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड कर सकते हैं. You know that area of triangle P1, P2, P3, it is equal to half of determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, x3 minus x1, y3 minus y1. आपको x1 y1 भी मालूम, x2 y2 भी मालूम, x3 y3 भी मालूम, ये वैल्यूज पुट करनी. Area of triangle formed by P1, P2 and P3. It is equal to half of determinant of x2 minus x1. It is equal to b upon m prime minus 0, b minus 0, b upon m minus 0, and it is b minus 0. It becomes half of determinant of order 2 by 2, b upon m prime b, b upon m, and it is equal to b. आप b कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट रो, आप b कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम सेकेंड रो, तो बाकी बच जाएगा 1 अपॉन m प्राइम 1, 1 अपॉन m 1. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट इज हाफ ऑफ b स्क्वायर multiplied by 1 upon m prime into 1 minus 1 into 1 upon m. Now it is equal to half b square multiplied by 1 upon m prime minus 1 upon m. LCM ले लें तो half b square m into m prime is the LCM. So you get m minus m prime. ये हो गया area of triangle formed by P1, P2 and P3. Now come to question number 10. Question number 10 कई दफ़ा एग्जाम में देखा गया है. क्या खास बात है, जिन लोगों ने ट्राई किया होगा उन्हें तो अंदाज़ा होगा. क्वेश्चन है द इक्वेशंस ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल the equations of the sides of the triangle are y is equal to m1x plus p1, y is equal to m2x plus b2, and x is equal to 0. Prove that its area is 1 upon 2 multiplied by b1 minus b2 whole square divided by m1 minus m2. तो आपको L1, L2 और L3 तीन साइड्स पे रखी हैं. L1, L2 and L3. L1 is equal to y is equal to m1x plus b1. L2 is y is equal to m2x plus b2, and L3 is x is equal to 0. आप
P1 P2 और P3 पहले फाइंड करें। तो सॉल्व L1 and L2 to find P1. So if we subtract any one equation from another equation, so y is equal to m1x plus b1, y is equal to m2x plus b2. माइनस करें तो साइंस चेंज हो जाएंगी, y minus y cancel, you left 0 is equal to m1x minus m2x plus b1 minus b2. इसका मतलब b2 minus b1 is equal to m1 minus m2 multiplied by x. आपको x की वैल्यू मालूम हो गई। x is equal to b2 minus b1 divided by m1 minus m2. आप x की ये वैल्यू L1 में पुट करें या L2 में पुट करें। Consider L1, it is equal to y is equal to m1x plus b1. Y is equal to m1 multiplied by x. It is b2 minus b1 divided by m1 minus m2 plus b1. It is m1 multiplied by b2 minus b1 plus b1 multiplied by m1 minus m2 whole divided by m1 minus m2 by taking LCM. m1 b2 minus m1 b1 plus m1 b1 minus m2 b1 divided by m1 minus m2. अब ये m1 b1 ये तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया m1 b2 minus m2 b1 divided by m1 minus m2. ये हो गया y। आपको x की वैल्यू भी मालूम, आपको y की वैल्यू भी मालूम, इसका मतलब आपको p1 मालूम हो गया। p1 is equal to b2 minus b1 divided by m1 minus m2 and y is equal to m1 b2 minus m2 b1 divided by m1 minus m2. Now solve L2 and L3. Solve L2 and L3. अब चूंकि L3 में आपको डायरेक्ट x की वैल्यू दे रखी है, x is equal to 0, तो L2 में वैल्यू पुट कर दें x की। L2 है y is equal to m2x plus b2 m2 multiplied by 0 plus b2, इसका मतलब 0 plus b2, इसका मतलब b2, इसका मतलब x is 0 and y is equal to b2. इसका मतलब आपको p2 मालूम हो गया, p2 is equal to 0, b2. अब इसी तरह से आप सॉल्व करें L1 और L3 को। If we solve L1 and L3, तो L3 में तो डायरेक्ट x की वैल्यू आपको पता है, it is equal to 0. ये वैल्यू पुट कर दें L1 में,
and one is y is equal to m1x plus b1. m1 multiplied by 0 plus b1, it is equal to 0 plus b1, it is equal to b1. इसका मतलब x की वैल्यू 0 पुट की तो आपको y की वैल्यू मिल गई b1. इसका मतलब आपको p3 मालूम हो गया. p3x comma y, it is 0 comma b1. Now we can find area. Area of triangle formed by p1, p2, p3, it is half of determinant of x2 minus x1, y2 minus y1, x3 minus x1, y3 minus y1. P1 is first point x1, y1, P2 is second point x2, y2, P3 is third point x3, y3. तो ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2 और ये हो गया x3, y3. वैल्यूज पुट कर लें. 0 minus b2 minus b1 upon m1 minus m2. It is y2 minus y1, so it is b2 minus m1 b2 minus m2 b1 upon m1 minus m2. 0 minus b2 minus b1 divided by m1 minus m2, and it is b1 minus m1 b2 minus m2 b1 divided by m1 minus m2. फर्दर सिंप्लीफाई करें. ये हो जाएगा हाफ ऑफ 0 minus, it is minus b2 minus b1 upon m1 minus m2. It becomes b1 minus b2 upon m1 minus m2. ये भी हो जाएगा b1 minus b2 upon m1 minus m2. यहाँ आप एलसीएम ले. m1 minus m2 is the LCM. अब बाकी बच जाएगा भाई b2 into m1 minus m2 minus m1 b2 minus m2 b1. यहाँ पे भी आप एलसीएम ले सकते हैं. m1 minus m2, बाकी बच जाएगा b1 into m1 minus m2 minus m1 b2 minus m2 b1. Now it is equal to half of b1 minus b2 upon m1 minus m2, b1 minus b2 upon m1 minus m2. It is m1 b2 minus m2 b2 minus m1 b2 plus m2 b1 divided by m1 minus m2. यहाँ पे भी एलसीएम तो ले चुके हैं. m1 minus m2, it is equal to m1 b1 minus m2 b1 minus m1 b2 plus m2 b1. तो अब m1 b2 कैंसिल हो गया. इसी तरह से m2 b1 यहाँ कैंसिल हो गया. It is equal to half of determinant of b1 minus b2 upon m1 minus m2.
B1 माइनस B2 अपॉन M1 माइनस M2। इन दोनों में से आप M2 कॉमन लें तो बाकी बचेगा B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। इन दोनों टर्म्स में से आप M1 कॉमन ले सकते हैं, बाकी बच जाएगा B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। अब कॉमन लिया जा सकता है फर्स्ट रो से B1 माइनस B2 डिवाइडेड बाय M1 माइनस M2। सेकेंड रो से भी B1 माइनस B2 अपॉन M1 माइनस M2। बाकी बच जाएगा 1 M2 1 M1। now it is equal to area of triangle P1 P2 P3 is equal to half of B1 minus B2 divided by M1 minus M2 whole square into 1 into M1 is M1, 1 into M2 is M2। M2 cancel हो गया, so it is equal to half of B1 minus B2 whole square divided by M1 minus M2। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन लाइंस, और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। इट इज़ वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करने के लिए दिए थे। अगर आप में से किसी ने ये खुद से कर लिया इट्स गुड, नहीं किए हैं तो अब आप खुद अपने आप से क्वेश्चन आंसर कीजिएगा कि क्या गलती की। ओके, थैंक यू वेरी मच।